But is it a serious problem? Yeah, it can turn out to be serious if you don't adhere to the proper diet. फिर बच्चा proper grow नहीं होएगा, उन्हें lose motion लगे रहेंगे, उदी height नहीं बढ़ेगी, so the bone pains होंगियां. So all these are avoidable by simply avoiding gluten. Okay. And when we are talking about wheat allergy, a lot of people, they are allergic to lactose. So milk का एक basic component. I think a lot of Indians are lactose intolerant. So basically lactose intolerance का पता लगता है जब patient कहता भाई मेरे गैस बन जाती है या पेट च दर्द होती है पेट आफर जाता है फलावट हो जाती है ते वो जदों दूध बंद करता है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है. So we have seen many times if patient stops milk then these symptoms go away and they can have curd or even lassi and those things won't produce symptoms like this. Milk products से problem milk products milk in itself can cause this problem. Okay. As a doctor, we have Nisha who's calling us from Mohali. Yeah, Nisha, what's your question? Good evening, Dr. Sir. Good evening. Sir, I'm Kavita Gupta. Hello. 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 Sir, I'm Kavita from Sector 70 Mohali. हाँ जी. Sir, actually I ate out last 2 days back. Since then I'm having loose motions. So that is why I think I'm feeling very weak. So what should I do? देखो अगर तक खाली लूज मोशंस हैगे और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ पेट दर्द नहीं है कोई बुखार नहीं है तो मेरे ख्याल ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ शिकंजवी बना के जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर होनी चाहिए है ये लवो 2.5 ਤੋਂ 3 लीटर हर रोज या फिर तुसी ORS ਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਘੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਪੈਕੇਟ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਸੋ ਖਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ You're welcome, Ji. Doctor, what is the common treatment that we follow at home? Yeah, common treatment, I think the dictum is that you should replace the fluid which has been lost. Okay. So whether it's an infant or it's a 100-year-old man, so the dictum remains the same. Obviously, the amount of fluid which is to be given to a patient will vary according to the weight and the disease and the severity of it. So one must give lime water with salt and sugar or electrolyte water and that is the basic thing. So basic aim is to avoid dehydration. So patient should have adequate amount of urine output, he should not be dehydrated and if he doesn't become well even after taking this then you must consult a gastroenterologist. Okay. क्या कभी ये भी जरूरत पड़ती है कि fluid loss के करके one has to be admitted to the hospital? Very true. अगर खासकर इतना पानी का लॉस हो गया खासकर जैसे डिजीजेज लाइक कॉलरा उसमें इतना ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं नंबर ऑफ स्टूल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो आदमी उतना पी नहीं सकता या साथ में उसको उल्टी आती है सो देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन योर आउटपुट एंड इनपुट सो अगर इतना ज़्यादा हो जाए तो आदमी की पल्स तेज हो जाती है और यूरिन कम हो जाता है डिहाइड्रेशन में पेशेंट चला जाता है तो ऐसे मरीजों को हम दाखिल करके थोड़ी देर ग्लूकोज लगा के तो बचा सकते हैं सो ऑल दीज आर प्रिवेंटेबल वंस. Okay. We'll take a short break now. We are talking to Dr. Dhawan about diarrhea and gastroenteritis problem. If you want to call us, you can call us on 5043-700. Doctor, what are the problems which are related to the water? The ones which we have discussed earlier, that's diarrhea and gastroenteritis which includes vomiting also and then cholera, typhoid, jaundice. All these are covered by the gastroenteritis department, gastroenterology department, sorry. Okay. But water is one thing which is very important, as we say, it's the essential part of our daily life. What all precautions should we take? Basically the hygiene factor and the hygiene factor, all of us know that the water should be safe and in Chandigarh I think that's what we are getting. It's a boon. Yeah, it's a boon. So even then people have aquas or ROs in their houses. So those who don't have such like facilities, I think the best thing is to boil the water, पानी उबालो और उबाल के फिर उन्हें पियो. I think there is no comparison to that.
Okay. So one should drink boiled water whenever there is an epidemic of or an outbreak of waterborne diseases. Okay. That's one. And second, one should never eat from the wayside places like dhabas, and don't eat any stale food. Okay. Okay. And don't reheat the food time and again. Okay. And whenever you have any problem which goes beyond a normal permissible limit, you must consult the doctor concerned. Okay. Doctor, we have Isha with us right now. Isha, I believe you're calling from Ludhiana. What is your question? Good evening, sir. Good I'm evening. Isha Sharma from Ludhiana. Good evening. Actually, sir, my daughter is perpetually sick during rains. My daughter is perpetually sick during rains, and she has loose stools and she cannot eat properly. So, Right. what precautions should I take? She is vomiting also, or she is having only loose stools? She is vomiting also. She is vomiting. What's her age? She's 4 years old. She is 4 years. Yes, Okay. So I think the first and foremost thing is that we must stop the vomiting. Only then we can give her fluids. So simple anti-emetic has to be given to her. If she accepts that orally, it's okay. Otherwise, some injection which can stop her vomiting has to be given. And once she stops vomiting, then we have to give her fluids, and she can have ORS or lime water with salt and water, and if she digests that, then we can give her some curd or banana which can be easily digested at this stage. So we must ensure that she receives adequate amount of fluid as well as the calories. Okay. From what I understood, she meant to say कि जब भी बारिश होती है उनकी डॉटर के साथ ये प्रॉब्लम होती है. Does it Okay. happen over and over again? No. Then I think there must be some problem in their hygiene. Okay. So either the child is taking food from outside, or he is taking time and again the food which is not hygienic, or he is not making his personal hygiene proper. So I think they should see toward what all food she has been taking throughout this period, and then we can sort it out. Okay. Isha, I think you should take care of the basic hygiene factor of your child. So make sure that she washes her hands properly, she doesn't eat outside, and has boiled water. And I'm sure the problem will be taken care of. Which all other waterborne diseases do we have? The other waterborne disease is typhoid, which is very common. In typhoid, patient will have acute diarrhea, and the fever is high grade. It may go up to 103, 104. There may be body pains, abdominal pain, and satellite patients, at times they need to be hospitalized and given intravenous medicines and intravenous fluids also. So another common group is patients who have cholera. Okay. So these patients have voluminous stools. Okay. So, and they are like rice water. So they can be easily diagnosed with the history only. So such patients need large volumes of fluid replacement. So these are potentially reversible diseases, and no one should die from dehydration. That's very pathetic if patient doesn't reaches the hospital in time and dies because of lack of fluids. So the treatment starts right away at home. तो वो ये ना कई बार हम प्रिकॉशंस नहीं लेते और हम उसका ध्यान नहीं रखते कि नॉर्मल सिचुएशन को समझ के कि नॉर्मली लूज टूल्स पास हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है, टाइम से कंट्रोल हो जाएगा. वी टेंड टू इग्नोर दैट. सो आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर दैट सिचुएशन एंड गेट इनटू एक्शन इमीडिएटली. डॉक्टर, वी हैव दीप्ति फ्रॉम पंचकुला. दीप्ति, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हेलो विकी, आई एम सो सॉरी. विकी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं डॉक्टर साहब, मेरा नाम विक्की प्राशर है. हाँ जी. मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मेरे लड़के को जॉन्डिस हो गया था, वो ठीक है, अब तो ठीक हो गया है. क्या उसको मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या उसको कोई टेस्ट करवाने, क्या चेकअप करने की जरूरत है, क्या आवश्यकता है? लेकिन वो ठीक है, हालांकि वो ठीक है अभी. उसकी विक्की जी उम्र कितनी है बच्चे की? 10 साल है सर. 10 साल है. तो कब उसका पीलिया ठीक हो गया? सर उसको 3 महीने हो गया. 3 महीने हो गए. ठीक है. So jaundice is another we can say a water and a foodborne disease, and jaundice, especially hepatitis A and E, these are food and waterborne. Okay. So if a patient gets hepatitis A and E, they usually recover out of it.
And how much time does it take? It takes around 4 to 6 weeks for them. Okay. So there is a vaccine also available for hepatitis A. So if one gets vaccinated against hepatitis A, then usually he doesn't get the jaundice due to hepatitis A. But he is still prone to hepatitis C. So basic question comes that we must maintain our standards of hygiene, whether it's water or it's food. As far as his question goes, अगर उसको पहले पीलिया हुआ है और अब वो ठीक है बिल्कुल, तो मेरा ख्याल सिर्फ एक लिवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए और जिससे पता लग जाएगा कि उसका लिवर अभी ठीक काम कर रहा है कि नहीं. और जॉन्डिस के फॉल आउट्स क्या होते हैं, as in if it deteriorates? अगर जॉन्डिस को हम ठीक टाइम पे ठीक नहीं करें और लंबा खिंच जाए तो ऐसे पेशेंट्स का फिर लिवर फेल हो जाता है. तो ऐसे पेशेंट्स को पेट में पानी हो सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, पैरों में सोजिश हो सकती है या वो बेहोशी में भी जा सकते हैं. तो ऐसी स्थिति को बचने के लिए हमें उसको रूटीन में चेकअप कराना चाहिए और दवाइयों से उसको ठीक कर दिया जाता है. तो फिजिकल स्टेट क्या रहती है किसी को अगर जॉन्डिस हो गया तो? फिजिकल स्टेट में तो उसकी आंखें जैसी पीली होंगी, उसको उस वक्त भूख नहीं लगेगी, उल्टी आने का दिल करेगा, कमजोर हो जाएगा, तो अपने काम पे जाना बंद हो जाएगा. तो ये ऐसी स्थिति ना आए तो इससे पहले उसका रूटीन वर्कअप कर लेना चाहिए और समय आने पे उसका ट्रीटमेंट संभव हो सकता है. जैसे जॉन्डिस में आपने कहा कि आंखें पीली हो जाती हैं, तो काफी लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को जॉन्डिस है तो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए. हाउ ट्रू इज दैट? नहीं, ऑल दीज आर मिथ्स. देयर आर सो मेनी अदर मिथ्स लाइक उसको कहते हैं कि आपने पीले रंग के कपड़े नहीं पहनने या पीले रंग की चीजें नहीं खानी है. ऑल दीज आर मिथ्स. फिर कहीं कहते हैं कि इसको गन्ने के जूस पिलाना चाहिए. सो ऑल दीज आर थिंग्स which we can say are only myths. Even ganne ka juice? Yeah, ganne ka juice is basically, concept is that you should have a high carbohydrate diet. Okay. So high carbohydrate diet reduces nausea and vomiting. So आजकल गन्ने का जूस जैसे पता है आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा. तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाहर की चीज इस पीरियड में ना खाई जाए. तो concept behind the sugar cane is to have less nausea. Okay. Yeah. And what are the food precautions that one should take? Food precautions, one should not have heavy meals and घी मक्खन तली हुई चीजें मिर्च मसाले ये थोड़े कम खाने चाहिए. अगर किसी को जॉन्डिस हो जाए उसने अपना समय लेके ही ठीक होना है. No system of medicine can reduce the duration of the illness. That's it. Another valid point which comes up when you're discussing about jaundice is, ये तो अभी हमने एक बच्चे के केस का डिस्कस किया, एल्डरली में जब हो जाता है, अडल्ट्स में हो जाता है, should they take alcohol? Alcohol is totally forbidden whenever a patient is having jaundice. Because it affects the liver? Yeah. क्योंकि लिवर पहले ही बीमार पड़ा है तो उसको एक और टॉक्सिक सब्सटेंस हम दे रहे हैं जो कि अल्कोहल है. तो अल्कोहल तो अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक और उसको नॉर्मल जॉन्डिस हो जाता है उस दौरान उस पेशेंट को बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए. ओके डॉक्टर, इट्स टाइम टू एंड नाउ. कैन वी हैव अ कैरी होम मैसेज फ्रॉम यू? Carry home message is whenever you have symptoms which persist beyond a permissible limit, like if you have diarrhea or vomiting which is not getting controlled, you must consult the doctor. You have jaundice, again do not take it lightly and consult your doctor. So अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए और तुरंत से तुरंत अपने स्पेशलिस्ट को मिलें और आगे कॉम्प्लिकेशन होने से बचें. डॉक्टर धवन, थैंक यू सो मच फॉर दैट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. आप हमारे स्टूडियोज में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We hope all this information proves really helpful for you in taking care of your loved ones. You can also mail us your queries on healthline@dayandnightnews.com. Next time, we will be joined in our studios by Dr. Meenu Singh, Senior Pediatrician at PGI. We will discuss with her the increasing incidence of asthma among kids. So if you have any queries, please call us on 5043-734 on Monday between 12 noon and 2 p.m. and register your calls. Till then, please take very good care of yourselves and stay healthy.